So if I talk about NLP, because NLP has been derived from recurrent neural networks, we know one thing is for sure that NLP will use text as input, right? But in case of RNN, also I told you that the text that we usually say in case of RNN is not usually the text that is fed to the algorithm. The input is obviously text in nature, but what actually gets into the algorithm is the vectorial format of that text, or you can say the numerical format of that text, which is derived using something known as word to vec technique, right? So this is something which we have seen in case of RNN, and that is true in case of NLP as well. Okay, so in NLP, when we are talking about these techniques, let's say word to vec also. So that is also a part of NLP only, which we discuss in case of RNN. Usually NLP में वो ज़्यादा helpful होता है. Okay. So what is word to vec? Word to vec is a technique of converting text into number. But in general, or in a layman term, if we say what is word to vec technique, it is usually a text pre-processing technique. Okay. So you don't have any idea of machine learning, but just to let you know, in case of machine learning, also we have something known as data pre-processing. Okay, whenever we talk about machine learning model and all, वहाँ पर भी we talk about something known as data pre-processing. Just like that, here also we have text pre-processing, which is the most important aspect of NLP. Okay. तो डेटा प्रीप्रोसेसिंग में यूजुअली क्या होता है कि जब भी आप मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं तो बिफोर यू यूज एनी एल्गोरिदम, बिफोर यू क्रिएट एनी मॉडल यूजिंग एनी एल्गोरिदम, इट इज एसेंशियल फॉर यू टू मेक द डेटा सूटेबल फॉर योर मॉडल. जितना अच्छा डेटा रहेगा उतना अच्छा एक्यूरेसी आएगा. इफ योर डेटा हैज रिडंडेंसीज, इफ योर डेटा हैज नल वैल्यूज एंड ऑल, it might not perform very nicely. Okay. So in order to get good accuracy, we need to prepare the data accordingly. Okay. तो डेटा को एक तरह से you can say एक redundant format से अच्छे format में convert करने का अलग अलग process होता है, which is known as data pre-processing. In the same way, the text that you will have to perform certain text pre-processing on that before you actually convert it into number format or vector format and feed it inside your algorithm. ठीक है? तो before we convert text to number, उससे पहले भी there are few things that needs to be taken care of. Right? So that is the main thing where we will be focusing today and in the subsequent classes. क्योंकि 3-4 steps है, we will be taking them one by one. Okay, and then we will be seeing how they are helpful for us. So what I am saying is, you have text, you just a second. You have text, you convert that text into number, or you can say vector, and then that is fed as input to the NLP model. Now that NLP model can be attention model, can be anything. Okay, so we will discuss that later on. But what I am saying is, when you are converting text to number, you know the process is known as word to vec, right? But beach maybe there are few things which needs to be performed. Okay, few steps are there which needs to be performed. Majorly there are 3 steps which needs to be performed. The first one is known as tokenization, second one is known as stemming, and third one is known as lemmatization. Okay, and specifically if I talk about NLP, because you are actually interested in NLP only, in case of NLP we won't be using word to vec directly. Okay, word to vec as a technique won't be used directly in case of NLP. वो RNN के लिए ठीक है, NLP के लिए भी ठीक है, but again you have a better alternative which is known as TF-IDF. ठीक है? So what is TF-IDF, what is tokenization, what is stemming, lemmatization, all these things we will try to understand from today onwards. Okay, so my objective of today's class will be to cover these 3 things at least, and TF-IDF we will take up tomorrow. ठीक है? So this is what we have understood. एक छोटा सा primer. अभी तक कोई doubt है तो you can ask me. Any questions? No, sir.
Okay, so let us directly start with tokenization. So what we know is tokenization is a text pre-processing technique. अभी तक हम लोगों को इतना पता चला है कि tokenization is a text pre-processing technique. Now, whenever you talk about tokenization, this tokenization can be sentence level. Okay, sentence level tokenization हो सकता है, word level tokenization हो सकता है, साथों साथ आपका कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन भी होता है. Okay, so character level tokenization भी होता है. What do I mean by that? What actually is meant by tokenization? Let us try to understand. So let us assume that you have some text as input, है ना? तो मान लो आपके पास एक let's say एक पेज का एक डॉक्यूमेंट है, एक पीडीएफ फाइल है या फिर एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है, एंड यहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन is given. ठीक है, multiple informations are given here, text format. Now, what happens is this entire chunk of data is known as a corpus, or people call it corpus also. So either you can call it a corpus or a corpse. Okay. So this is your corpus or corpse, and this corpus at a time will not be processed. Okay. Whenever we talk about text pre-processing, पूरा का पूरा corpus एक बार में process नहीं होगा. Fine. So what will happen is this. Let's assume this is entire one paragraph. Okay, ये one paragraph है. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस paragraph को break down करेंगे. Okay, so let us assume that I am considering, or let's say if I am considering this entire paragraph, ये पूरा का पूरा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें we will apply sentence level tokenization. कहने का मतलब है कि अगर ये पैराग्राफ के अंदर 10 sentences है, while performing sentence level tokenization, all those 10 sentences will be separated like this. 1, 2, 3, 4 इस टाइप से 10 सेंटेंस आपका सेग्रीगेट हो जाएगा. ओके, सो व्हाट इज टोकन इन दिस केस? टोकनाइजेशन में क्या है, ये टोकन के बारे में बात करता है. ओके, सो व्हाट इज टोकन इन दिस केस? This is one token. This another sentence is another token. This is third token, fourth token, fifth token, and so on. ठीक है, तो sentence level tokenization में the sentences are going to act as different tokens. Okay, and sentence कैसे आया? By breaking down the paragraph. So paragraph को break down करो and sentence मिल जाएगा. Okay, this is your sentence level tokenization. Now, once you have these sentences, what we can do is we can further bifurcate these sentences into words, है ना? And that will be known as word level tokenization. For instance, मान लो कि you have this first statement, ये जो पहला statement है. Okay, so I'm just giving you one example here. So I'll just write it down here. मान लो the first sentence which is here is today is Saturday. Okay, this is the statement that we have. Now this is sentence level tokenization that we have received from the paragraph. Now when you are applying sentence level tokenization से जब आप word level tokenization में जा रहे हैं, so what you will do is you will separate these different words which are actually constituting the sentence. So today is Saturday, ये जो sentence था ये अब bifurcate हो गया. कहने का मतलब है today becomes one token, is becomes another token, and Saturday becomes the third token. So ये पहला token, ये दूसरा token, ये तीसरा token. Sentence वही है, but उसको हम लोग divide कर दे रहे हैं, further bifurcate कर रहे हैं into different words. So in case of word level tokenization, you can say that the words of a sentence, the constituting words of a sentence are considered. So अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर token क्या है, so these are the different tokens. The different words of the sentence are the different tokens. ठीक है. Now at times, whenever people who are using NLP specifically for grammatical errors,
who want to check for grammatical errors and punctuation and all those things, what they do is they move one step further and they also talk about character level tokenization. हालांकि in general day-to-day life you won't be performing character level tokenization much, उतना ज़्यादा useful नहीं है, बहुत rare to rare case में character level tokenization काम आता है, but yeah, there is a provision of using this character level tokenization as well, wherein what happens is this is one step further. मतलब पहले हम लोग के पास क्या था, पैराग्राफ था, पैराग्राफ को ब्रेक डाउन किया सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन किया वर्ड्स में, देन द वर्ड्स आर गोइंग टू बी ब्रोकन डाउन इनटू कैरेक्टर. सो अगर कैरेक्टर का बात किया जाए तो यहाँ पर कैसे आएगा, अगर हम लोग यही स्टेटमेंट को आगे फर्दर कर रहे हैं तो यहाँ पे टुडे अगर आप कंसिडर कर रहे हैं एक वर्ड, तो TODAI ये सारा अलग अलग टोकन बन जाएगा. IS फिर वैसे ही सैटरडे का पूरा स्पेलिंग SATURDAY. ठीक है, तो ये क्या हो गया, अलग अलग टोकन बन गए. दिस इज वन टोकन, अनदर टोकन, like that. Okay, so in case of character level tokenization, the constituting letters are the tokens. Okay, this is what we have. Now again, if you want to go further into this, you can read few blogs, समझ में आ जाएगा, but this is the main intuition. And why character level tokenization helps in dealing with grammatical error and all, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पर सैटरडे के बाद कोई एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन मार्क रहता है, कुछ भी रहता है, so even that symbol would have been used as a separate token. And when you have a particular targeted symbol or a particular targeted word जहाँ पर कि आपको एनालिसिस करना है, okay, कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए था या फुल स्टॉप होना चाहिए था या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, उस केसेस में कैरेक्टर लेवल टोकनाइजेशन माइट हेल्प यू. माइट क्या है, वो हेल्प करता है, तो दैट इज गोइंग टू help you, character level tokenization. Okay, so in general, if I define tokenization, what is that? It is a way how you are going to segment or how you are going to bifurcate the given corpus, text corpus, into individual components. Now those individual components can be individual statements, it can be individual words, it can be individual characters depending upon the situation. Okay, this is tokenization. ये समझ में आया? Yes, sir. Okay, so this is what we have with respect to tokenization. Now after tokenization, there is something which we perform known as stemming. Okay, there is something known as stemming that we perform. Again, stemming is also a text pre-processing technique. Okay, before performing TF-IDF, we have to perform stemming as well. अब स्टेमिंग में देखो क्या होता है. स्टेमिंग में यूजुअली whenever you are, again let us assume you have this text corpus. Okay, you have this text corpus and you are talking about word level tokenization, या मान लो you have talked about sentence level tokenization. Okay, मान लो आपके पास एक पैराग्राफ था, you convert that paragraph into, let's say, sentences, and then those sentences are converted into words. ठीक है, after this you have to perform stemming, and usually stemming के बाद ही हम लोग lemmatization perform करते हैं. So after stemming you can also go for lemmatization. Okay, so I'll talk about lemmatization in a while. Fine. So पैराग्राफ से सेंटेंसेस कर लिए सेंटेंस लेवल टोकनाइजेशन से, फिर सेंटेंस लेवल टोकनाइजेशन से वर्ड लेवल टोकनाइजेशन कर लिए. उसके बाद जब हम लोगों के पास ये वर्ड्स है तो क्या करेंगे, हाउ कैन वी परफॉर्म स्टेमिंग, व्हाट इज एक्चुअली स्टेमिंग. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज द कॉर्पस दैट यू हैव. ओके, इस कॉर्पस में हो सकता है कोई एक वर्ड ऐसा हो जो बार बार आए. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से प्ले. ओके, play is a word which might come multiple times in your text corpus. Okay, so processing play or playing or plays, okay, इस टाइप का वर्ड को बार बार प्रोसेस करना is not a very wise decision, क्योंकि उसका जो क्रक्स मीनिंग है
जो ऑब्जेक्टिव है उसका, वो तो विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट सेम ही रहेगा, है ना। फॉर इंस्टेंस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ प्ले एज प्लेइंग अ पियानो, मतलब कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला प्ले के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा कॉर्पस लिखा गया है। तो इस पूरे का पूरा पैराग्राफ में वो मीनिंग तो नहीं बदलने वाला है, वो मीनिंग जो प्ले का है वो नहीं बदलने वाला है, वेदर यू आर सेइंग प्ले or whether you are saying plays or whether you are saying playing. Okay, the meaning of play is not going to change with respect to the corpus, with respect to the context. Let's say context के respect में वो meaning नहीं बदलने वाला है, and because of that what we can do is, instead of processing that word multiple times, we can use the parent word or the root word and we can process that. So basically stemming में क्या होता है कि आपके पास एक वर्ड आया कॉर्पस में, मान लो प्लेस, ओके। फिर कुछ देर बाद आया एक वर्ड प्लेइंग, ओके। फिर कुछ देर बाद आया एक वर्ड प्ले, ओनली प्ले, ओके। सो व्हाट वी विल डू इज, इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग ऑल थ्री ऑफ देम इंडिविजुअली, व्हाट वी कैन डू इज, वी विल कंसिडर द रूट वर्ड एंड वी विल बी परफॉर्मिंग स्टेमिंग हियर. So what is the root word? Play is the root word. Play से ही plays बना, play से ही playing बना, and play से ही play बना. So when you have this kind of a situation, you get to the root word and that is known as stemming. So play क्या है? आपका root word है. And ये कैसे पता चला? By performing stemming. So once you have the root word, you can do the processing on this root word only and accordingly सारा changes आपको reflect हो जाएगा. तो हर एक में करना इज नॉट अ वाइज डिसीजन. रूट वर्ड तक पहुंचो एंड रूट वर्ड पे प्रोसेस करो, टेक्स्ट प्रोसेसिंग करो एंड योर जॉब इज डन. एंड हाउ टू रीच एट द रूट वर्ड? बाय परफॉर्मिंग स्टेमिंग. ठीक है. नाउ कभी कभी क्या होता है कि स्टेमिंग इज अ गुड प्रोसेस, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट कभी कभी क्या होता है कि द आउटपुट दैट यू विल गेट, द रूट वर्ड व्हिच आई एम सेइंग, दिस इज द रूट वर्ड, ओके. सो द रूट वर्ड that you might get by performing stemming may or may not have any meaning. ठीक है. कभी कभी ऐसा होता है कि उसका मीनिंग होगा, जैसे यहाँ पे इट इज मीनिंगफुल, कभी कभी होगा कि इसका मीनिंग नहीं होगा. फॉर इंस्टेंस, मान लो यू हैव हिस्ट्री एंड यू हैव लेट्स से हिस्टोरिकल. ठीक है. तो अगर हम लोग इसका रूट वर्ड खोजेंगे तो आपको रूट वर्ड मिलेगा हिस्टोरी, PORI, ओके. This is going to be the root word. Now the problem is कि this HISTORI, okay, does not make any sense, okay. इसका meaning कुछ है नहीं. This is a root word which we get from performing stemming, but as I told you, उसका कुछ meaning हो, कुछ meaningful word हो, ये जरूरी नहीं है, okay. So that is a actually problem with stemming, because of which we have to go one step ahead and we have to perform lemmatization also. क्योंकि लेमेटाइजेशन में जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो हमेशा मीनिंगफुल रहेगा, बट स्टेमिंग में मीनिंगफुल आउटपुट मिले या मीनिंगफुल रूट वर्ड मिले ये जरूरी नहीं है. मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ओके. सो व्हेन यू हैव सच अ सिचुएशन, व्हेन यू आर सपोज टू परफॉर्म टेक्स्ट प्रीप्रोसेसिंग, तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, पहले स्टेमिंग कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपके पास 10 वर्ड है, ओके, आपके पास 10 वर्ड्स है. इस 10 वर्ड्स में से लेट अस अज्यूम 4 वर्ड्स करेक्टली किया परफॉर्म. तो स्टेमिंग जब हम लोग परफॉर्म किए तो 4 वर्ड ऐसा आया जो कि मीनिंगफुल है. दीज आर मीनिंगफुल, ठीक है. दीज आर मीनिंगफुल वर्ड्स, दीज आर 4 मीनिंगफुल वर्ड्स दैट वी गेट व्हेन वी परफॉर्म स्टेमिंग. ठीक है. जब ये 4 चीज कर लिए, इसके बाद हम लोग के पास कितना वर्ड्स रह गया? 6 वर्ड्स ही रह गया. So this 6 words will be fed to lemmatization, ठीक है. And obviously क्योंकि lemmatization है तो 6 का 6 में वो आपको meaningful word देगा, ओके. तो lemmatization में आपका जो word limit था वो डिक्रीज हो गया. यहाँ पे स्टेमिंग में कितना वर्ड्स पे वो प्रोसेस किया? 10 वर्ड्स पे प्रोसेस किया, बट लेमेटाइजेशन पे कितना किया? 6 वर्ड्स पे किया. सो it is advisable that even though stemming won't give you perfect and accurate results in all the words that is given in the corpus, but still it is suggested कि आप एक बार stemming कर लो. क्यों? क्योंकि कुछ हद तक तो वो आपको सही
आउटपुट देगा। मतलब नॉट एग्जैक्टली 10 का 10 वर्ड्स वो आपको मीनिंगफुल देगा, बट एटलीस्ट 4 देगा या एटलीस्ट 3 देगा। तो क्या होगा कि लेटर ऑन in the next step when you are performing lemmatization, at that point of time the number of words that we will have to give as input to lemmatization will be less in number. And you will find this, I'll tell you this again, we will repeat this point again, कि stemming is actually a slow process. Sorry, my bad. Stemming is a fast process. Okay, it is a fast process and lemmatization is a slow process. ये याद रखना। Fine. क्यों ये fast है and क्यों lemmatization slow है? That is because, as I told you, that in case of stemming, the output or the root word that you are getting, it may be useful or let's say it may be meaningful, it may not be meaningful. हो सकता है meaningful हो सकता है meaningful ना भी हो। तो आपका objective in case of stemming क्या रहता है कि आप तुरंत root word पे पहुंच जाए। अब उस root word का meaning है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Okay, so that is why stemming is fast. But lemmatization में क्या हो रहा है? The output or the root word that you are getting is always a meaningful word. तो meaning खोजना पड़ता है. Okay. For instance, अगर हम लोग इस history and historical वाला example को अगर हम लोग lematize करें, okay, ये तो सही आ गया stemming में, तो इसको फिर से नहीं करना है। यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, गलती आया है, okay, meaningful नहीं है. So what we will do is this history and historical will be fed again by performing lemmatization, and this time the output that you will get is history, history। तो ये हो गया meaningful word। तो meaning खोजने में किसी भी word का एक meaningful root word खोजने के लिए time लगता है। Okay, for example history, historical तो आसान word है। Let's say if we are talking about some complex English words or complex any other language words, so at that point of time getting to the root word which has some meaning takes time। Okay, so that is why you will find कि lemmatization एक slow process है, but stemming है एक fast process। तो जब आप lemmatization कर रहे हैं as it is वो एक slow process है। अगर आप उसको और भी डेटा दिए जा रहे हैं like 10 words पूरा का पूरा दे रहे हैं lemmatization के लिए, so it will again take more time to process क्योंकि as it is वो slow process है। उसको और input दे रहे हैं तो वो और slow काम करेगा। So that is why it is advisable पहले stemming कर लो, थोड़ा बहुत जो भी words का वो सही आउटपुट दे दिया उसको रख लो, जिसका सही आउटपुट नहीं दिया बस उतना को लेमेटाइजेशन के लिए भेजो, ताकि लेमेटाइजेशन व्हिच इज अ स्लो प्रोसेस इट विल हैव कंसिडरेबली लेस नंबर ऑफ इनपुट एंड वो आपको जो आउटपुट देगा वो कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी देगा। ठीक है, so that is the idea of stemming and lemmatization. Always remember stemming is going to give you meaningful output, lemmatization sorry, my bad, stemming may or may not give you meaningful output, but lemmatization will always give you a meaningful output। ठीक है, so these are 3 important text pre-processing techniques that we have understood। इसका अब coding करेंगे हम लोग। okay, so I will go to my collab, we will do the coding now, but उससे पहले एक बार check कर लो, कोई doubt है कहीं तो you can ask me। any questions, any doubts anywhere? No, sir. Okay, so these things are clear। okay, so ये समझ में आ गया tokenization, stemming and lemmatization। So now let us before I go to the coding part, there are a few more things which we should be knowing whenever you talk about NLP। तो in case of NLP I'm just giving you a brief idea, ये आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। okay, जब याद करने वाला चीज रहेगा तो I will tell you। so machine learning में क्या होता है? okay, machine learning में you have a very important library which is known as scikit-learn। okay, ये एक बहुत important library है machine learning का, सारा algorithm इसके ही अंदर available है। okay, multiple algorithms are there in machine learning, all of them are integrated inside scikit-learn। similarly जब हम लोग deep learning का बात करते हैं
Okay. इस केस में you have something known as tensor flow, which is very important. Okay. टेंसर फ्लो के अंदर भी एक आपका केरास बोल के मॉड्यूल होता है. So this keras is doing everything for you. Okay. Very important. Right. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हालांकि ये दो चीज आप नहीं भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. What is important for you is that when we move one step ahead, okay, when we move one step ahead, when we talk about NLP, okay, तो NLP में the library which is very important is known as NLTK, okay, Natural Language Toolkit, okay, this is the full form. So NLTK मतलब Natural Language Toolkit, and it is a very important library which we will be using today also and in subsequent classes also. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्पेसी. ओके. एक तीसरा लाइब्रेरी है विच इज नोन एज रास्ता. ओके. स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए एनएलटीके इज अ वेरी ह्यूज, एक बहुत बड़ा सा लाइब्रेरी है. आज उसको यूज करना हम लोग सीखेंगे अभी. इसके अंदर आपका एक मॉड्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलर. ओके. ये पॉपुलर हम लोग आज यूज करने वाले हैं एंड आगे भी यूज करेंगे इसको. इसके अंदर जितना भी एनएलपी में आपका टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के लिए जरूरत है, आई वुड से पैकेजेस का, वो सारा इंटीग्रेटेड है. ओके. सो ऑल द पॉपुलर, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट्स, all the important popular packages of NLTK are integrated inside this module known as popular. ठीक है. स्पेसी का भी अगेन टेक्स्ट प्रीप्रोसेसिंग से संबंधित काम है. इफ आई टॉक अबाउट रासा, रासा इज यूज्ड टू प्रिपेयर चैटबॉट. Okay. So whenever somebody is preparing a chatbot with respect to NLP, he or she is indirectly using RASA. Okay. Again, RASA के अंदर you have NLU, NLG. Okay. Similarly, there is natural language understanding, natural language, and यही सब कुछ है. Multiple things are there inside RASA. ठीक है. So you should be aware of these names actually. Okay. And one more thing which we will see in subsequent class, but just keep that in mind कि जो भी हम लोग टेंसर फ्लो बात करते हैं हम लोग आपका टोकनाइजेशन का, लेमेटाइजेशन का, स्टेमिंग का, ये सारा कुछ का, all of them are part of NLTK. But this TF-IDF, okay, TF-IDF जो है, this is available inside scikit-learn. ठीक है. scikit-learn के अंदर TF-IDF दिया हुआ है. Now ये क्यों है, ये I don't know the answer for this. Okay, because essentially scikit-learn is a machine learning algorithm or a machine learning library. So ideally अगर बात किया जाए तो TF-IDF को उसके अंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक separate domain है NLP. But I don't know why this TF-IDF is a part of scikit-learn. So whenever we are making use of TF-IDF, we will be using scikit-learn only as the background library. तो बस इसको याद रखना, हो सकता है कभी आपसे directly कहीं पूछ लिया जाए. Fine. So this is what we should be aware of. And now let us directly start with the coding. Okay. So this is the platform. I guess you are already aware of this platform. You have seen this collab platform. So what we do now is, ठीक है. What we do now is we will be using, देखो अब जब बात कर रहे हैं हम लोग NLP का and all these things, obviously we will have to use some text data. Okay. So what we will do is we will be copying some data from the internet. ठीक है. मान लो इंटरनेट से कुछ डेटा को कॉपी कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर रहे हैं, and then once we have that we will be proceeding ahead and we will be preparing our model. ठीक है. So just give me a second and we can start now. तो मान लो कुछ भी एक हम लोग ले लेते हैं input. Okay. So
input के लिए let me just open another tab here, just a second, and let us see. Fine. So let me just open this. Okay. So let us talk about enantiomer. Okay, ये basically एक simple सा concept है. Chemistry में usually people talk about these things. Okay. So what we will do is we will simply take a paragraph from this particular, let's say, platform. Okay. And मान लो यहाँ से ले लेते हैं कुछ. ठीक है. So I'm just taking a text from here, and now I will be pasting it here. ठीक है. So I will say paragraph is equal to, I will put my paragraph here. ठीक है. Again, you can make it as per your discretion. अगर ये पूरा एक लाइन में नहीं चाहिए, इसको ऐसे नीचे you can bring down just to give it a look of a paragraph. हालांकि वो ना भी करें तो कोई अंतर नहीं पड़ता. ठीक है, ऐसा कुछ. Fine. So this is my, I would say, paragraph that we will be using. This is my input text that we will be using, and इसी पे हम लोग सारा कुछ समझेंगे आज कि आपका कैसे अलग अलग प्रोसेस किया जाता है. Fine. So let us start with that. Okay. Now before this, before I go ahead with the paragraph, it is important for me to import the libraries. So I will import NLTK. Okay. NLTK library I will be importing. Once this is imported, as I told you, inside NLTK, we will be downloading the popular packages. So I will say NLTK dot download, and यहाँ पर I will say क्या download करना है, popular. So the popular packages are going to be downloaded. You see multiple packages have been downloaded, and finally you get the output as true, जिसका मतलब है कि आपका सारा कुछ download हो गया. Now I will execute this cell, this paragraph cell, and we will start with our first part, which is known as tokenization. So let us start with tokenization. Now what we have is a paragraph, है ना? एक paragraph है हम लोगों के पास. So what we can do is we can convert this paragraph into I can say sentences, है ना? पहले sentences में convert करेंगे, then अगर जरूरत पड़ा तो word level में भी convert करेंगे. So what we will do is we will perform sentence level tokenization. Fine. Now to perform sentence level tokenization, the context or the code is very simple. You just need to say sentence. You can create any variable. I'm saying sentence here. So you can say sentence, or you can say sentences is equal to nltk dot sent underscore tokenize. Okay. And क्या चीज को टोकनाइज करना है? पैराग्राफ को टोकनाइज करना, because paragraph is the name of my variable where the data is stored or the text corpus is stored. ठीक है. Now if you say sentences, you will see the different sentences are separated by the help of this /n.
ओके, सो ये स्लैश एन क्या है? ये एक्चुअली एक डेलीमीटर है, just like your full stop, which is showing you that this marks the end of the sentence. So similarly यहाँ पे भी एक end of the sentence के लिए slash n है, यहाँ पे भी slash n है. Okay, so this means यहाँ पे भी slash n है, which means that the text corpus, which was एक बड़ा सा input paragraph, उसको क्या किए हैं हम लोग sentences में divide कर दिए हैं या sentences में tokenize कर दिए हैं. Okay. In the same way, you can perform word level tokenization as well. Okay. उसमें भी like paragraph wise कुछ खास मेहनत करना नहीं है. What we will do is we will simply copy this part here, and यहाँ पे I will say word level tokenization, and I will say words is equal to NLTK dot sent underscore, sorry, sent नहीं, sentence नहीं कर रहे हैं, word underscore tokenize and paragraph here input. So that is something which we will do, and you can just see what are the words. So this is what the words are. Okay, basically every word of this input text was considered separately. So if the starting material, all these words which are there a part of your input text corpus are divided into different corpus, or sorry, different tokens. तो यहाँ पर token क्या है? अलग-अलग words. ठीक है? So this is word level tokenization. कोई डाउट है अभी तक सेंटेंस लेवल टोकनाइजेशन, वर्ड लेवल टोकनाइजेशन में? No, sir. No. ओके, सो ये चीज हो गया आपका टोकनाइजेशन, एंड व्हाट वी एसेंशियली हैव इज different words. Okay, now once we have these words, as I told you, we can start with the next aspect which is known as stemming. ठीक है, stemming करें. Now stemming में you know that we actually try to get into the root word. Okay, and it may be that the root word has a meaningful, मतलब उसका मीनिंग हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस रूट वर्ड का मीनिंग ना हो. ठीक है, तो whenever you are performing stemming in case of NLP, you have to use a module known as Porter stemmer. Okay, तो NLTK के अंदर ही you have this Porter stemmer module. Okay, and just a second, just give me a minute. So I was saying that whenever you are performing stemming, you have to use something known as a Porter stemmer. ठीक है, Porter stemmer को use करना होगा. So let us start with that. I will first import that Porter stemmer thing. So I will say यहाँ पर I will say from NLTK dot stem, क्योंकि stemming कर रहे हैं. So I will say NLTK dot stem import Porter stemmer. ठीक है, तो ये Porter stemmer को import कर लिया गया. It is basically the module which will help you in performing stemming. ठीक है, similarly from NLTK we will have to import one more thing which is known as stop words. Stop word क्या होता है? I will explain you in a minute. So I will say from NLTK dot corpus or corpus import stop words. ठीक है, अब देखो stop words क्या होता है. लास्ट क्लास में जब हम लोग बात कर रहे थे RNN के बारे में, and when I told you that RNN has a problem of long-term dependency, it is having a limited memory and we cannot go on adding information to the cells of RNN. वहां पे we understood that we will only be focusing on the important words, है ना? सिर्फ important words पे फोकस करेंगे, ऐसा वर्ड पे फोकस करेंगे जो कि सेंटेंस का
मीनिंग आपको बताने में हेल्प करता है। एंड द रिमेनिंग वर्ड्स विच आर जस्ट देयर एज अ पार्ट ऑफ कनेक्टर्स, उसको हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्योंकि अगर उसको इग्नोर ना किया जाए तो क्या होगा, बेमतलब का आपका सेंटेंस का लेंथ बढ़ जाएगा एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज द प्रॉब्लम ऑफ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी विल बी रिफ्लेक्टेड। तो ये जो प्रॉब्लम था उसको काइंड ऑफ टेक केयर किया गया था बाय LSTM and GRUs, wherein the concept of selective read, forget and write आया था, जिसको अगर एक लेमैन टर्म में एक लाइन में अगर कहा जाए तो वो यही था कि जो भी कनेक्टर्स है उसको इग्नोर करो, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है विच आर ऑल्सो नोन एज की वर्ड्स उसको ध्यान में रखो। ओके, उसको लेकर के आगे बढ़ो। एंड व्हाट आर द की वर्ड्स which are going to those words which are going to give you the crux or the meaning of the entire statement। ठीक है, तो जो कनेक्टर्स था जिसको कि हम लोग इग्नोर कर रहे थे, ओके, वही कनेक्टर्स को NLP के भाषा में स्टॉप वर्ड्स कहा जाता है। सिंपल, मीनिंग वही है, कॉन्टेक्स्ट वही है, नाम अलग है, विच इज स्टॉप वर्ड्स। सो हर एक लैंग्वेज में, इफ इट इज इंग्लिश, इफ इट इज डच, इफ इट इज स्पेनिश, कोई भी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज में अपना अपना स्टॉप वर्ड्स होता है। और जैसे हम लोग के पास एक वोकैबुलरी होता था इन केस ऑफ वर्ड टू वेक टेक्निक, इफ यू कैन रिकॉल, एक वोकैबुलरी हुआ करता था, है ना, उसी तरह से स्टॉप वर्ड्स का भी एक खुद का वोकैबुलरी है। और यू कैन से एक लिस्ट ऑफ स्टॉप वर्ड्स है जिसके के अंदर सारा ये स्टॉप वर्ड्स को अवेलेबल किया गया है। ओके, सारा स्टॉप वर्ड को स्टोर करके एक लिस्ट के अंदर रखा गया है इन every language that you have। So if you're talking about English, उसमें भी है, कोई और लैंग्वेज का भी अगर बात किया जाए, हर केस में स्टॉप वर्ड है। So I'm importing those stop words also। पोर्टर स्टेमर import कर ही लिए हैं। And now we will create a variable here। I will say stemmer is equal to porter stemmer। ठीक है, and then अगर if you want to see the stop words, मान लो अगर आपको चेकिंग करना है, I will just mention it here। मान लो I will show you the stop words। Stop words is equal to or stop words dot words। Stop words is not defined। Stop words, ये क्या रहा है, stop words import किया ना, fine, उसको शायद एग्जीक्यूट नहीं किया था। Okay, so these are what? These are your stop words in English: have, haven't, hasn't, isn't, okay, mustn't, shouldn't, weren't, wouldn't, okay, when, there, here, then, further, again। You see, ये जो भी words है इतना सारा, इसका कुछ meaning नहीं है। मतलब अगर usually आप एक बात करें एक sentence का, so these words are usually used to connect different words or different sentences together। इस सेपरेट वर्ड को अगर आप उठा ले, मान लो हरसेल्फ को अगर आप उठा लेते हैं, या हर्स को उठा लेते हैं, या इटसेल्फ को उठा लेते हैं, देमसेल्फ को उठा लेते हैं, उसका पर्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं है। ओके, बट अगर हम लोग बात करें एक वर्ड का, जैसे बैड, ओके, स्वीट, फिर लेट्स से गुड, कुछ भी ऐसा वर्ड्स का जिसका कुछ मीनिंग हो, जो कॉन्टेक्स्ट में कुछ मीनिंग को डिलीवर करता हो, वो यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, but again those words which are acting only as connectors, they will be available here। ठीक है, so these are the stop words in case of English। ये सारा का सारा जो भी आपका लिस्ट है ये स्टैटिक रहेगा एक लैंग्वेज के लिए। तो अगर इंग्लिश है तो हर बार यही वर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, एंड these are good in number। okay, these are good in number and they are your stop words actually। fine, now coming to stemming part again। now यहाँ पर क्या हो रहा है कि I have created a variable saying stemmer is equal to quota stemmer, and then what we will do is we will move one step ahead and we will perform the final part of stemming। मतलब stemming में एक ही block of code है
बेसिकली फॉर लूप चलाएंगे हम लोग यहाँ पे. I will say for I in range and I will give the length of the sentences. Okay. जितना भी सेंटेंसेस है आपके पास टोटल कॉर्पस में, जितना भी सेंटेंसेस है वो पूरा का पूरा उसका लेंथ को कंसिडर करेंगे. मतलब इन शॉर्ट आई एम सेइंग दैट आई विल बी कंसिडरिंग ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ माय कॉर्पस वन बाय वन. ओके. इसके अंदर क्या कर रहे हैं, आई विल से वर्ड्स इज इक्वल टू nltk डॉट वर्ड अंडरस्कोर टोकनाइज. ओके. किसको टोकनाइज करो, सेंटेंसेस को टोकनाइज करो अकॉर्डिंग टू देयर इंडेक्स वैल्यू. मतलब पहले 0th सेंटेंस को टोकनाइज करो. ओके. वर्ड लेवल पे, मतलब हर एक वर्ड ऑफ दैट सेंटेंस विल बी टोकनाइज्ड. देन फर्स्ट सेंटेंस को करो, देन सेकंड सेंटेंस को करो, देन थर्ड सेंटेंस को, एंड सो ऑन. जितना भी टोटल नंबर ऑफ सेंटेंसेस है सबको वन बाय वन टोकनाइज करो वर्ड लेवल पे. ओके. एंड देन कम्स द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट wherein I will say words is equal to stemmer. यहाँ पे basically stemming चलेगा. I will say stemmer dot stem. Okay. Word for word in words. If word not in set stop words dot words English. This is the most important ENG. This is the most important part of your code. And finally क्या करेंगे हम लोग, सारा statements को join कर देंगे. So just give me a second, let me finish with the code, then I'll explain you क्या हो रहा है यहाँ पे. Maybe word is not defined. कौन सा word? Okay, इसको word बना देते हैं. This should work. Okay, यहाँ गलती है. For word in words. If word not in this set, ठीक है. अब शायद काम कर जाए. Okay. Now I'll just quickly show you इसका output क्या है, then we will discuss कि क्या किया गया यहाँ पे. Okay, fine. So this is the output that I was expecting. Okay. Now see what happens here. पहला लाइन आएगा सबको समझ में आ रहा होगा, मतलब रवि आएगा सबको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है. दूसरा लाइन भी समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है. कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अलग अलग स्टेटमेंट्स जो है आपका कॉर्पस के अंदर, अलग अलग सेंटेंसेस जो है उसको क्या कर रहे हैं, वन बाय वन सारे सेंटेंसेस को वी आर कंसिडरिंग एंड वी आर परफॉर्मिंग वर्ड लेवल टोकनाइजेशन ऑन ईच वन ऑफ देम. ओके, वन आफ्टर द अदर. थर्ड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, देखो थर्ड स्टेटमेंट में एज आई टोल्ड यू सम टाइम बैक कि you will be having a set of stop words or connectors. Now, as I told you, कि those connectors are not going to have any impact on the final output of your model, है ना. आपका मॉडल कुछ भी अगर prediction कर रहा है
उसमें ये स्टॉप वर्ड्स या ये कनेक्टर्स कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करने वाले। ओके, दे आर जस्ट देयर एज connectors or stop words. They don't have any significance as such. They don't contribute much in the output. Okay. तो जब कोई ऐसा वर्ड है जो कि आउटपुट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसको स्टेम करना इज वेस्ट ऑफ टाइम, राइट, एंड वेस्ट ऑफ योर कंप्यूटेशन मेमोरी, है ना। वही चीज हम लोग लेमेटाइजेशन में भी देखेंगे कि हम लोग जब भी टोकनाइजेशन कर रहे हैं, तो टोकनाइजेशन में तो सारा वर्ड्स कंसिडर हो जा रहा है, क्योंकि वहां पे आप एक एक वर्ड को एज टोकन्स कंसिडर कर रहे हैं एंड आप टोकनाइजेशन कर दे रहे हैं, तो वहां पे थिंग्स आर ओके, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टेमिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर वर्ड का रूट वर्ड पहुंच रहे हैं। अब कोई ऐसा वर्ड है जो कि फाइनल आउटपुट में आपका हेल्प ही नहीं करने वाला है, उस वर्ड का रूट वर्ड तक पहुंचने का मतलब क्या बनता है, उस वर्ड का रूट वर्ड में जाने में टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब बनता है। ओके, so those words are what? Those words are the stop words, which are not actually helping you in any way or the other. So what we do is we try to ignore those stop words. तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि stemmer dot stem करो किसका, words का। ओके, जो भी आपका word है in the given sentence उसका stem करो। ओके, उसमें stemming perform करो। ओके, if यहाँ पे देखो, if word not in set this stop words, ये जो stop words dot words का जो set है, ओके, उसका जो set है या you can say list है, उसके अंदर अगर ये words ना आ रहा हो तो ही stemming करो, अदरवाइज मत करो। तो ये जो बड़ा सा ये जो लिस्ट आया है या फिर set आया है of stop words, इसके अंदर अगर कोई word है जो कि आपके टेक्स्ट कॉर्पस के अंदर भी है, दोनों जगह अगर अवेलेबल है, उसमें स्टेमिंग मत करो। उसके अलावा जो भी है उसमें स्टेमिंग करो एंड फाइनली ज्वाइन कर दो सारा वर्ड्स को जो इस स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स के अंदर नहीं आता है। ओके, तो जब आप ऐसा वर्ड जो कि स्टॉप वर्ड्स डॉट वर्ड्स के अंदर नहीं आता है, वो सबको अगर आप स्टेमिंग कर रहे हैं एंड फाइनली सबको जोड़ दे रहे हैं, तो आपके पास इस तरह से आउटपुट आता है which actually gives you the stemming of the given text input which we had. Okay, now यहाँ पे कहीं you will find कि there are few sentences or there are few words, basically sentences नहीं, there are few words in these sentences which might not make any sense to you. Okay, अब आज तो ज़्यादा टाइम नहीं है, I have some engagement from 8 o'clock, so I will conclude the class today. But कल वाले क्लास में we will see कि when I perform lemmatization, we will continue from here itself. तो जब आज स्टेमिंग हम लोग किए हैं, कल के क्लास में जब हम लोग लेमेटाइजेशन करेंगे, at that point of time you will be able to notice the difference between the output of stemming and lemmatization. You will see that stemming में कहीं कहीं कोई वर्ड्स ऐसा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके, जैसे हिस्ट्री वाला बात किए थे हम लोग, HISTORI वाला, राइट। सो वैसा कुछ वर्ड्स होगा यहाँ पे which will not make any sense to you right now. But when you perform lemmatization and once you get the output after performing lemmatization, you will see each and every word has a significance, each and every word has some meaning. Again, वहां पे भी हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि वही वर्ड्स को लेमेटाइज करो जो कि स्टॉप वर्ड्स के अंदर नहीं आता, क्योंकि स्टॉप वर्ड्स एज इट इज हम लोग के लिए कुछ खास हेल्पफुल है नहीं, तो उसमें लेमेटाइजेशन करके टाइम बर्बाद करना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। ओके, तो वो सारा वर्ड्स हम लोग कंसिडर नहीं करें। ओके, सो ये था आपका stemming and tokenization, and in the next class tomorrow we will again, कल का क्लास भी 7 बजे रखते हैं, and tomorrow we will basically first of all complete lemmatization का coding, and उसके बाद we will talk about TF-IDF. एक बार TF-IDF हो जाए उसके बाद we will be going into the different models of NLP, जैसे bidirectional RNN हो गया, फिर attention model हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये सारा के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। Okay, so this code file I will be sharing with you. Okay, you can have a look.